Meanwhile, the situation in Darjeeling also still remains tense. In fact, the restive town of Darjeeling observed a 12-hour bandh on Friday. There still remains an uneasy calm as both the Gorkha Janmukti Morcha and the Trinamool Congress are preparing their next plan of action, with the Chief Minister already holding an emergency meet in Siliguri today with the Chief Secretary and the DG. The Gorkha Janmukti Morcha will also be holding a meeting to discuss their next move. The Gorkha Janmukti Morcha chief Bimal Gurung has threatened to launch a fresh agitation for a new state. क्या पहाड़ का मूवमेंट कर रहा है मेरे को तो पता नहीं है, but we are with the people, with the really brothers and sisters, and we will give them full help. And we will ask them not to support the Bimal Gurung and আর ট্যুরিজম বলবো আতঙ্কিত হওয়ার কোনো কারণ নেই, ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। বেলা 11টা থেকে এখানে 8-10টা বাস থাকবে যেগুলো শিলিগুড়ি নিয়ে যাবে এবং শিলিগুড়ি থেকে কলকাতা ডাইরেক্ট বাস দেওয়া হচ্ছে। এগুলো আপনারাও একটু বলবেন আর হেল্পলাইনও করে দেওয়া হয়েছে ডিএম অফিসে অলরেডি। जब हम गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के सपोर्टर से बात कर रहे थे, जब आ रहे थे दार्जिलिंग में, तो उनका कहना एक ही था, हम लोगों का डिमांड है गोरखालैंड और इसी के लिए हम लोग लड़ेंगे। तो ये जो जीटीए बना था, आप खुद मुख्यमंत्री के साथ बैठ के जीटीए में साइन किए थे, यू आर द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ जीटीए, तो ये जीटीए छोड़ के फिर से गोरखालैंड की डिमांड क्यों हो रही है? जीटीए तो अभी 2011 में साइनिंग हो गया था 18 जुलाई में। उसका बाद में हमने सोचा था एक ये जीटीए बन गया है आंदोलन करते समय, तो इसको अच्छा रन करेंगे सोचा था, क्योंकि यहाँ का जो विकास उन्नति के लिए थोड़ा दिन ये हम लोग काम करेंगे। लेकिन बंगाल का नीति जो जीटीए चलने नहीं दिया, ओवररूल किया, अभी जीटीए को मारने के लिए साजिश किया है, उसी ने पैदा किया, उसी ने मारने के लिए कोशिश किया। तो ठीक है, आज ये जो वातावरण सृष्टि हो गया, तो अभी सीधा सीधी हम लोग का अपना लक्ष्य गोरखालैंड के। दिल्ली में सरकार है, मोदी सरकार, तो ममता से तो अब आप पिटीशन नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने जीटीए दे दिया। तो ये स्टेट गोरखालैंड का ये जो पिटीशन है, ये किसको करेंगे? आपको लगता है मोदी सरकार कुछ करने? हाँ, मोदी सरकार को, क्योंकि 2009 में 2014 में हमने बीजेपी को सपोर्ट किया और भरोसा है अभी मोदी सरकार ने जो भी देश के लिए कर रहा है, और आगे भी बीजेपी ने 3 स्टेट बनाया, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ बनाया। ऐसा ही हम लोग का जो गोरखालैंड बीजेपी का सरकार ही बना। Let's go straight across now to India Today's Indrajit Kundu for more on this. Indrajit, determined Bimal Gurung there threatening to renew the agitation for Gorkhaland at a time when the Chief Minister is personally overseeing the arrangements and is holding a review meet? Well, absolutely. You know, the standoff between the West Bengal government and the Gorkha Janmukti Morcha, continues at this point in time. Today, however, the strike call has been withdrawn. So yesterday, entire Darjeeling was shut. Today, shops and establishments are slowly opening as the town slowly limps back to normalcy. So all those, tourists who were stranded out here, they're slowly making their way out of Darjeeling at this point. So there is a tense situation on the ground. However, the situation at this point is under control. At 11 o'clock, the Gorkha Janmukti Morcha Central Committee will be meeting and they would be discussing plans to take their agitation forward. Even as Mamata Banerjee, who left Darjeeling last night, will be meeting in the Siliguri plains to review the security situation of the district. And mind you, the Superintendent of Police of Darjeeling has also been changed. What does the Chief Minister have to say about the entire agitation? What's her take? Because we've seen the ugly hostilities between the Trinamool Congress and the Gorkha Janmukti Morcha in the past as well. The Chief Minister believes that this is a ploy of, the Gorkha Janmukti Morcha, because the Trinamool Congress believes that the Morcha is losing grip of Darjeeling Hills. Because the Gorkha Territorial Administration, a semi-autonomous body, was made after tripartite talks between the state, the Gorkha Janmukti Morcha and the central government in 2011, when Mamata Banerjee first came to power in West Bengal. It's been 5 years since then that the GTA has been in charge of the entire hills, and Bimal Gurung is the chief executive of the GTA. In July, the GTA is going to have its first election in fact, and that's going to take place in July. So Mamata Banerjee and the Trinamool Congress is claiming that because the Gorkha Janmukti Morcha is losing its grip on the hills before the elections, that's why it's indulging in violence. All right, Indrajit, thanks so much for joining us and getting us up to speed with the very latest coming in from the picturesque town of Darjeeling that has been also hit by violence.